हेलो। शुभम, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। मैं ऑडिबल हूँ ना वैसे? हाँ, आप ऑडिबल हो। Awesome, awesome. So, So guys, hello, again, hello, hello. let me give you all a brief instruction how we are going to proceed. Initially, I will ask him some basic general questions for 10 to 15 minutes. Then I will open the floor to all of you. You can unmute your mic and ask him any question. And in between, if you have any query, you can type in the comment section. So start करते हैं. So Shubham, it would be better if you introduce yourself. Okay, so hello everyone. My name is Shubham Shukla, and I've secured an All India ranking of 43 in UPSC CSE 2021. I am native to Balia in Eastern UP. I have done my manufacturing engineering from Silani, which I graduated in 2018. And this year was my fourth attempt. It was also my fourth mains, but it was the very first time I made it to an interview. And this is in short a brief about me and my journey, a very short introduction of mine. So that's it. Okay. So Shubham, how did you define your UPSC journey? Like what are mistakes and takeaways? Okay, so my UPSC journey has been a series of highs and lows, and then one high and then a couple of lows, finally culminating into a very final high. So I've made mistakes on my way as such, like choosing a very wrong optional, not doing enough answer writing practice, and not doing enough revision as such, and most importantly, not following toppers' notes and everything. So there have been some mistakes, but then finally, by the time I reached to my fourth attempt, I think I like made up for all these mistakes in the past. Okay. So according to you, these are your mistakes. Yeah, mostly. Okay. So as I am receiving a repetitive message regarding the people who are not able to clear the prelims. So what would you Okay. suggest to them? Like how to deal with this uncertainty, or is it necessary to have plan B or to stuck only to this exam? See, there are two type of people who are unable to clear prelims. One is the people who are losing it by a couple of marks. Like for them, I would say be patient, practice more tests, follow some sort of intelligent guessing option elimination strategy, and revise a lot. This would be helping you. For others who are missing it by a bigger margin of let's say 8 marks, 10 marks, or even more, or at least by 10 marks or more, for them, I would suggest them to revisit their books and strategies once again. Like they have to go back to the drawing board and redraw their strategies. So this is something that I would be telling to these people. Okay. So yesterday And we had a question with Arpit. So he is suggesting that he followed a feedback mechanism to okay, check whether he's on a right track or not. So is there any that mechanism you want to suggest? for prelims, I would suggest see a sense of incremental improvement. By incremental improvement, I would like explain it like this. Let's say there's this test number one of modern history. You are able to attempt only 50 questions. You are able to get only 50 questions correct. Okay, the questions you do not get correct, what you need to do is you mark them, read the solution, revisit those 50 questions next time. And this is what we do it in an incremental way. I'm not really sure if the other person meant this, but this is what I would recommend. Okay. And for the main. For the mains, a lot of this incremental change comes from how you write and what you write. And before you write, you must be clear with the basics. And at the same time, you must be reading toppers' answers copies because they are sitting in an invisible gold mine. And more often than not, they'll give you a benchmark of how to proceed with an answer. And be very open while writing test series and while receiving the feedback of test series. Be very open and be very humble. If there are some changes that have been suggested to you, try working on them. And if possible, we can also do some sort of uh, tracking of your scores. Like let's say first score of first GS1 paper you get around 70. Next time anything above 70 is a bonus. So the goal should not to like slide down the curve irrespective of the length of the paper or the difficulty level of the paper. And this is something that can be applied. Okay. Okay.
So as 7 to 75 days are left for the upcoming main. So any particular suggestion you want to give? Okay, so yeah, there are a couple of suggestions that I would like to give to these people. First, if you haven't revised your basic books or basic notes, do them, finish them ASAP. Number two, enroll in a good test series or a good mentorship series. Practice on them as much as possible. Number three, again, be very open to any sort of suggestions. Number four, try reading one topper's answer copy daily by without fail. One Okay. answer copy a day, and just not just reading or going. It's like analyzing what they have done, that have found their name so high up in the list. This is what is to be done. And lastly, most importantly, get into some sort of physical activity, a little walking or anything, a little 15, 20 minutes, half an hour a day would be something is better than nothing, right? So this is something that can be Right. actually be pursued. So for the beginner, what would you suggest? Like a best time to start this answer writing practice? There are many opinions on this. There are some there are some people who suggest answer writing after you've read a chapter. I'm someone who suggests that at least finish a subject before you jump into answer writing for that subject. For example, if there are questions for history, एक बार history complete कर लो. It will be easy to connect the A to Z in case there's a question on that, right? Otherwise, different people have different take. I believe that once you complete a subject, or at least once you complete the revision of your GS, that will Okay. be the best time to start some sort of answer writing. Okay. So any particular kind of timeline you want to suggest for 2023 aspirant? Okay, so aspirants who have actually given a couple of months. Again, 2023 aspirants I would categorize into two type of people. One who will Right. be starting the preparation from July onwards, and the others who have started their preparation from the past couple of months. So to the later bracket, the ones who have already started the preparation, try winding up your GS portion by November end. And December, Jan, Feb, consolidate your optional as well parallelly. In fact, your GS and optional preparation should go parallelly in hand in hand. Let's say 6 days a week, right? So 4 days you can give to your GS, or 3.5 days to your GS, and 2 days, 2.5 days to your optional and your ethics in your essay. So try winding up your GS for your by the end of November. And for the people who haven't started or are starting from the 1st of July or a little later, try winding up your GS by the end of December. And while doing your GS, give adequate time to optional as well. You do not do your GS completely and then you next month after your GS or target ends, you go to optional. You do it parallelly and try winding up your optional by the end of February. ताकि March से you give 3 dedicated months to prelims. So by end of that, our optional should be set. Okay. Done. So according to you, what are the do's and don'ts in this UPSC preparation? Okay, so first I'll talk about the don'ts. Number one, don't scammer around for resources. Right. Right. Do not resource overload. Per subject, other than your optional, 2 books more than enough. NCRTs plus coaching notes, NCRT plus other standard book, coaching notes plus standard books, bus. Any permutation combination. Number one, do not overload your resources. Number two, do not skip some sort of practice. For three, it is your mocks. For mains, it is your daily answer writing or your test series. Do not skip them. Number three, do not ignore revision. Again, very critical. People लगता है कि एक बार पॉलिट लक्ष्मीकांत पढ़ ले मतलब कि अब हम ही लक्ष्मीकांत है हम ही जूरिस्ट बन गए नहीं डू नॉट डू दैट रिवाइज करते रहो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छे अच्छे की बेइज्जती हो गई है वी गाइस आर नो डिफरेंट एंड फोर्थ डू नॉट लूज फेथ ऑन योरसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टेस्ट स्कोर मेरे भी प्री के पहले स्कोर्स कितने आते थे 60 65 ऐसे करके आते थे एंड में प्री क्लियर हर बार हुआ है 4 अटेम्प्ट हुआ है ठीक है ना सो डू नॉट पैनिक अबाउट दिस इफ यू आर लूजिंग स्कोर्स understand and be humble enough to realize where you are actually losing to. That's the point. Right. And lastly, number 5, do not follow a herd mentality. चलो ये कर रहा है हम भी करते हैं नहीं. Everyone has a unique way of studying, a unique method of preparation, a unique strategy to it, a unique approach to it. Do not follow herd mentality unless it is common sense. Unless it is common sense. Again, a disclaimer. So these are the 5 major don'ts. The do's would be the mirror image of this. Right. So guys, you can ask any question to him. You can unmute your mic and ask him Someone has any. mentioned. Hello. Hello, sir. Am I audible? Shubham, you Yes, say sir, loud and clear.
Sir, my question is like, Yeah, I was telling you someone had typed a question. We can take it okay. after his question. Yeah, bro, continue. Okay. So, sir, last year you got in mains GS marks around 340 something, and this year you jumped to 430 something. So, sir, what changes you brought Yeah. that this incremental and that huge gain, not incremental? What changes in just in next one attempt? Okay, so the important thing is that it looks incremental, a huge change on a macro scale. On a micro scale, it's around 80 marks of rise in around 80 questions. So it's actually 1 mark increase per question, and that is something that you should be targeting. What you can be doing is what I actually did was drew a lot of diagrams, flow charts, underlining, data stats, keywords, both in a sprinkling of information. I did this a lot. I referred to a lot of toppers copies, got a good book, got some good introductions, conclusions, made use of current affairs and interlinking with static questions. So this is broadly what I did mostly for my including my export. Completed the entire paper, did not leave anything. I hope I've answered your question, right? Yes, Hello? sir. In the comment section. Okay, like my friend, whoever has asked it, I'm actually very pleased about your ambition, but there is nothing like a short 100 plus. ऐसा कोई strategy मुझे नहीं पता है, right? Right. Like यही पूरा short 100 आ जाएगा. What you can do from your end is revise your basic books and read your basic books, revise them time and again. And उसके बाद what we can actually do is practice a lot of mocks, current affairs को entry पढ़ते रहना without ignoring current affairs. And at the time of D-Day, जो बोलते हैं ना, we need to focus on how to like guess questions well, like intelligent guessing and optional elimination पे बहुत work करना पड़ जाएगा. तो to be honest, I do not know if there is a short strategy which gives you if there's a strategy that gives you a short 100 plus, but for a very strong extent, I can say that if you do your basics well, if your foundation is good, and if you have a good knowledge of things around you, you can be expected to get a good score. Right. So, Shubham, what would you suggest a strategy for the PSI option? PSIR option. Okay, so PSIR option, I'll be very honest with you. I changed my option midway. In my first 2 attempts, my option was chemistry. And chemistry से मैं बहुत खराब score आ रहे थे, so I jumped over to pol science midway. And I did not have the time or the luxury to read any books as such. So मैंने literally Shubhra ma'am के ही notes follow किए थे for PSIR, and that is something that I felt was very decent enough for me. That worked decent enough for me. So मैम के notes market में मिलते हैं, अब देख लो. Otherwise, if you want to join a coaching, feel free to join a good coaching. But मैंने mostly मैम के notes नहीं पढ़ा था because I did not have time. Pre जब clear हुआ, I joined crash course on PSIR. So this helped me with answer writing and stuff. मतलब मैम की कोचिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी. Sorry? I'm saying कि मैम का कोचिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी और join टेस्ट सीरीज. उसमें टेस्ट सीरीज भी था. I couldn't write my test series. Again, I'm being very honest. I could not write my test series because मेरा ऐसा था कि मुझे लिखना आता है. मुझे बस था कि मुझे लिखने का सामान चाहिए था. मुझे सामान अच्छे से प्रॉपर मिल जाए स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो वो हो जाएगा. मतलब मेरा कवर कर लूंगा मैं. मुझे इतना भरोसा था. I did not write test series as such, but उनका टेस्ट का सॉल्यूशन था, मैं वो देख लेता था, वीडियो सॉल्यूशन. Okay. So someone is asking in the comment section guidelines for the essay. From where should we cover the material? Okay, so essay के लिए there are 2 things that we need to know. I'll discuss both of them. First is your content. Your content of your essay comes from a couple of sources. First is your GSK book, GSK notes. Second is your current affairs, and third would be the world around you, the pop culture reference हो गया, anything that's happening around you, a good book that you have read. ये 3 हो गए आपके sources. यहाँ से आपको essay का material मिलेगा. Another very important direction for your essay or source will be your toppers की notebook, जिसमें बहुत toppers के आंसर कॉपी जैसे के जिसमें बहुत सारे अच्छे आइडिया मिल जाएंगे. तो टॉपर्स के आंसर कॉपी मैं बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए रेफर किया करो. Every 7 papers of names refer to toppers answer copies will be in a lot of green. And this was about your content. The second part is about structure. तो स्ट्रक्चर मतलब कि कैसे फ्लो कर रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, and how are you able to effectively communicate your idea. This comes under your structure, your flow.
तो हमें यही इंश्योर करना है कि when we are writing out an example, when we are writing different dimensions of an essay, we cannot be sacrificing structure for the sake of flow and neither can we sacrifice flow for the sake of structure. मतलब कि दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है. तो अगर आप कोई स्टोरी से ओपन कर रहे हो तो स्टोरी उस ऐसे के थीम पे रेलेवेंट होनी चाहिए. एंड जब वो स्टोरी ऐसे के थीम पे रेलेवेंट है, आप एग्जांपल्स दो और कनेक्ट करते हो. एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्ट करो, दूसरे को तीसरे से करो. एंड में ऐसा कंक्लूजन दो ताकि आप वो सीधा वो स्टोरी लिखे हो बिगनिंग में उससे इंटीग्रेट करता है. तो यही है, स्ट्रक्चर और फ्लो का खेल, स्ट्रक्चर का और कंटेंट का खेला है. दोनों को किसी को इग्नोर नहीं करना है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है. केवल फ्लो पे ही भरोसा नहीं रखना है, केवल एग्जाम्पल से नहीं देते रह जाना. दोनों में बैलेंस होना चाहिए. दिस इज अबाउट ऐसे. Read a lot of Topper's copies. It will help you a lot. Trust me, guys. I'm telling this everywhere that I go. Yeah, like at least one copy per day. Yeah, 7 days a week है. 7 पेपर सॉल्व करने आपको. डेली एक कॉपी पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम. So someone is asking how to prepare for ethics, like GS4. Okay, so GS 1, 2, 3 और ऑप्शनल्स, ये सब पेपर आपको लिखना होता है आपके दिमाग से. एथिक्स पेपर आप लिखते हो अपने दिल से एंड थोड़ा दिमाग का यूज करते हो. तो एथिक्स पेपर को यही अप्रोच रखना है, दिल से लिखना है आंसर. आप एडमिनिस्ट्रेटर्स बनोगे, आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा. ह्यूमेन साइड, कंपैशनेट साइड, एडमिनिस्ट्रेटर लाइक क्वालिटीज, ALQ बोलते हैं. आपको यही सब अपने एथिक्स के आंसर में शो करता है. यही है. अगेन टॉपर्स कॉपीज देखो, 180 मिनट का पेपर होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एकदम बीच में डिवाइड करो. 90 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 90 मिनट्स फॉर केस स्टडीज. 15 मिनट के अंदर केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करो. केस स्टडीज कैसे सॉल्व करेंगे? टॉपर्स की कॉपीज देखो. बेस्ट सोर्स केस स्टडीज की हो ही नहीं सकता है. ठीक है ना? समझो कैसे चीजें चल रही है. एक काम ये कर सकते हैं आप लोग कि जैसे बहुत सारी वैल्यूज होती है ना, ऑनेस्टी, कंपैशन, लव, पीस, इनका 1 लाइन डेफिनेशन एंड 1 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड 1 लाइन ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये 2-3 लाइन के एग्जाम्पल ये दे दो. ये 20-30 वैल्यूज क्लिक करो, एक दिन का काम है आपका. तो दिस इज हाउ यू अप्रोच एथिक्स. एथिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना है, दिल से लिखना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. ठीक है. Shubham, how to write answer in this 7, 9 or 11-minute duration? I did not get you. बताओ. Saying for the answer writing perspective, like how to write answer in this 7, 9 or 11-minute duration. Like we have 7 minutes for the 10 markers like this. Okay, timing. You asked the timing, right? So Right. ideally 7 to 7.5 minutes for your 10 marker question and 9.5 to 10 minutes for your 15 marker question. Right. So I'm asking how to write answer in this duration. Like we have to revise the note or what else are we have to do? Okay, if you want the daily breakup, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि फॉर योर टेस्ट, ठीक है, आपके बस के 5 मिनट में आपको बॉडी दे. ठीक है, 5 मिनट आपको बॉडी लिखना है. बॉडी में भी 2 पार्ट आता है. एक पार्ट मान लो 4 पॉइंट है, तो 2.5 मिनट में 4 पॉइंट लिखने हैं. 2.5 मिनट का कितना सेकंड हो जाता है? 150, ऑलमोस्ट लाइक 30 सेकंड्स पर पॉइंट, व्हिच इज फेयरली मैनेजेबल, राइट? और अगर और फिर भी 10-15 सेकंड इधर उधर बच जाता है तो एक डायग्राम या कुछ इलस्ट्रेशन ये सब बना लो आप. तो दिस इज हाउ यू फिनिश अ 10 मार्किंग क्वेश्चन इन लेट्स से 7.5 minutes. Similarly, you can talk about a 15 marker question in 9 and 10 minutes. Similar data use करना है. Okay. So Shubham, जो ये टेस्ट सीरीज का स्कोर रिफ्लेक्ट कितना करता है मतलब इन द मेंस एग्जाम? क्या मतलब क्या रेशियो? Depends on test series to test series. तो टेस्ट सीरीज का स्कोर एकदम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. I would think but देखो पॉइंट ये है ना कि I would personally recommend कि अपने स्कोर्स पे मत ध्यान दो, इंक्रीमेंटल स्कोर पे ध्यान दो. मतलब कि मान लो पहले टेस्ट सीरीज में 70 आए, अगले वाले में लेक्चर आपके 80 आ रहे हैं, तो मतलब आपका ग्रोथ है. ठीक है ना? मतलब आप ग्रो कर रहे हो एंड ग्रोइंग इज इंपॉर्टेंट. असली में कैसे मार्क्स क्या आते हैं, किस बेसिस पर, नो वन नोस. इट्स अ ब्लैक बॉक्स. बट पॉइंट यही है कि आपको यही इंश्योर करना है कि आप हर एक अगले टेस्ट सीरीज में कुछ सीख रहे हो एंड जो पिछले टेस्ट सीरीज में गलतियां हुई थी उसको आप इंप्रूव कर रहे हो. दिस शुड बी द गोल. पर्सनली स्कोर में बस इंप्रूवमेंट आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जरूरी है. Okay. So someone is asking, tell us about micro notes. Okay, I haven't made micro notes as such for GS. I made it for my optional. GS के मैं सीधा बुक से पढ़ता था, PDF से पढ़ता था, अंडरलाइन करके बस.
एंड फॉर माय ऑप्शनल आई मेड माइक्रो नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड. तो पॉल साइंस है, बहुत कीवर्ड हेवी सब्जेक्ट है, तो कीवर्ड्स और ऑथर और स्कॉलर्स लोग के नाम और उनके कोट्स, ये सब चीज में इंपॉर्टेंट चीजें को मैं टॉपिक वाइज मेंशन कर लेता था, इन्हीं को रिवाइज करता था. दिस इज समथिंग यू कैन डू. GS के लिए I have not made notes as such. I have not made micro notes, so I do not think I'm the right person to talk about this. Okay. So what would you suggest like current affairs strategy for the separate for the prelims or separate for the main? Okay, for prelims current affairs के what I would suggest is कि एक newspaper, कोई भी हिंदू इंडियन न्यूज़पेपर कोई भी, प्लस वन करंट अफेयर मॉड्यूल मैगजीन वाला, कोई भी जो भी मन करे आपका, नॉट एन इशू. दिस वुड बी फॉर योर प्रीलिम्स. मंथली करंट अफेयर्स प्लस वन न्यूज़पेपर. और मेंस शायद उतना न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ना हो, तो एटलीस्ट एडिटोरियल्स पढ़िए एंड वो जो कंपाइलेशन आते हैं ना मेंस वाले, मेन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का, वो देख लो. एंड मीनवाइल अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो यू कैन वॉच सनसेट टीवी डिबेट्स आफ्टर एवरी फ्यू डेज, या फिर डेली सनसेट टीवी के डिबेट्स देख लो. दैट वुड आल्सो बी अ गुड थिंग. सनसेट टीवी डिबेट्स एक्चुअली बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, आपको इनोवेटिव पॉइंट्स दे देते हैं. ठीक है, तो इस मैंने किसी आंसर में सनसेट टीवी के डिबेट्स के पॉइंट्स मेंशन किए थे. आई फेल्ट प्रीटी सैटिस्फाइड विद माय आंसर ऑन दैट क्वेश्चन. ये भी आप कर सकते हो. इसको में एक डिबेट रहता है कि कितना ड्यूरेशन का करंट अफेयर करना चाहिए, तो उसका बताइए आप. डेली न्यूज़पेपर्स 2-3 घंटे मत पढ़ लेना लगना, अनलेस आपके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा टाइम मिलता है, जो नहीं मिलता होगा. तो न्यूज़पेपर को 30 to 45 मिनट स्टार्टिंग पीरियड में 1-1.5 घंटा लग सकता है, ग्रेजुअली कम हो जाएगा. एंड लेट्स अगर आपने 40 मिनट्स ये पढ़ा, तो आपको यही टारगेट करना चाहिए 50 मिनट्स आप वो करो, कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन देख लो या फिर कुछ करंट अफेयर्स लेके रिवाइज कर लो. तो दिन भर में 1-1.5 घंटा ऑफ करंट अफेयर्स वुड बी अ वेरी गुड अमाउंट. मतलब नॉट गुड, it would be a very good amount that you are investing in that. So like many people are suggesting to add 2-3 dimension in 10 marker or more dimension in 15. So according to you, for a beginner perspective, what are these dimensions? See, dimensions are very hard and fast rule नहीं होता है. One important thing about dimensions is that it helps in categorizing your body of your answer. It is a good practice too, but it does not apply in all type of questions. So let's say कुछ क्वेश्चन के impact of poverty, सोशल इम्पैक्ट दे सकते हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट दे सकते हो. तो दीज आर योर डायमेंशंस दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. बट हर जगह डायमेंशन देना पॉसिबल नहीं होता है. तो 10 मार्क्स के लिए आप लेट्स से अगर आप 3 डायमेंशन दे रहे हो और हर डायमेंशन 2-2 पॉइंट दे दोगे, इट वुड बी गुड. 15 मार्क्स के लिए और 3-4 पॉइंट बढ़ा दो, और 1-2 डायमेंशन बढ़ा के 3-4 पॉइंट बढ़ा दो. मतलब ओवरडू नहीं करना है, अंडरडू भी नहीं करना. ऑप्टिमल लेट्स से 10 मार्क्स के लिए 7 पॉइंट वुड बी ऑप्टिमल, एंड 15 मार्क्स के लिए 9 to 11 points would be optimal. Okay. Introduction conclusion के साथ. In fact, 12 points would be optimal. Like 4 per head. 12 would be optimal for 15 marks. Like what are these dimensions? Like a beginner is facing many issues कि होते क्या हैं? Like ठीक है, जो veteran होता है उसको समझ में आ जाता है. देखो, तो डायमेंशंस के बारे में होता है कि आप अपने आंसर किस मोड पे दे रहे हो, किस मोड के थ्रू अपने आंसर को ले जा रहे हैं. जैसे एग्जांपल पॉवर्टी का क्लासिक एग्जांपल, पॉवर्टी के सोशल इंडिकेटर्स होंगे, सोशल डायमेंशंस होंगे, सोसाइटी पे क्या डायमेंशन पड़ रहा है. पॉवर्टी के लीगल डायमेंशंस हो जाएंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्राइम्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कन्विक्शन रेट फॉर पुअर पीपल. पॉवर्टी के एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो जाएगा. जो गरीब होगा वो ये सोचता है कि भाई हम तो अमीर होंगे नहीं, और वो साइकोलॉजिकली एक बोलते हैं ना, डाउनवर्ड क्लोज में आता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है. ठीक है, फिर हेल्थ डायमेंशन हो गया. गरीबी में लगता है बच्चों को कि और बच्चे, भी लोगों को लगता है और बच्चे पैदा करेंगे मतलब और ज्यादा हाथ रहेगा, जिससे लोग काम कर पाए, घर में थोड़ी और पैसे आएंगे. ये भी दिक्कत रहता है. ये भी अलग अलग चीज को सोच सोच के आपको ब्रेक करता है. दीज आर योर डायमेंशंस दैट वी टॉकिंग अबाउट. So Shubham, according to you, is it necessary to have plan B? ओके, आप लोगों में से लगता है एस्पिरेंट्स लोगों ने देखा होगा टीवी पे एस्पिरेंट्स, तो उसमें प्लान बी के बारे में बोला गया है. प्लान बी का काम होता है आपको स्टेबिलिटी देना. So it's always good to have plan B. There's nothing wrong with it, but make sure your plan B does not become your plan. For example, if your plan A is UPSC and your plan B is state services, very good. The private job, very good, no issue with that. कोई गलत नहीं है करने. But ऐसा ना हो जाए कि हम केवल स्टेट यूपी और बिहार के लिए वो कौन सी एडुटेरिया और यही सब पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत छुए ही नहीं कभी, तब आप अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बोल सकते. तब आप अपने आप को स्टेट एस्पिरेंट बोलिए, तो उस केस में आपका प्लान बी हो जाएगा यूपीएससी.
ये आपको ध्यान पहले ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एनी And अदर definitely क्वेश्चन? देखा जाएगा। There are a couple of people who have been asking questions. मैं खुद देखता हूँ एक बार तो किसी का क्वेश्चन मिस हुआ या नहीं। Guys, if you have any query, you can unmute your mic and ask him. रिया जी ने पूछा था कैन वी स्पीक इन अ कॉम्बो ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश? नो, आइडियली नो। आइडियली यू शुड बी स्पीकिंग इन योर ओन लैंग्वेज ऑफ चॉइस, बट कई बार ऐसा हो गया कि कुछ बहुत टेक्निकल हो गया। मेरे एक दोस्त से पूछा गया था मखाना के बारे में। मखाना बिहार का एक वो आता है, स्नैक्स आता है, उसको पता था, उसने बोला कि हिंदी में करके पूछा, नहीं गॉट गुड मार्क्स। तो कभी कभी हो सकता है, बट आइडियली जिस लैंग्वेज बोला, दिस द लैंग्वेज यू हैव ऑप्टेड फॉर इज द लैंग्वेज यू शुड बी टेकिंग इन योर इंटरव्यू। Right. बताइए कुछ बताइए। Muskan, I do not know about Piyush Choubey, sir. His notes, I've heard he's a good teacher, but I have not read about Piyush Choubey, sir के notes. उत्कर्ष शुक्ला ने पूछा है हाउ टू डू कल्चर फॉर मेन। कल्चर के लिए या तो आप एक फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी देख लो, नहीं तो आप वो देख लो नितिन सिंघानिया सर के कल्चर वाले, प्लस सीसीआरटी वैसे पढ़ते हो थोड़ा, सीसीआरटी का जो वेबसाइट है, बट सिलेक्टिवली करो। हाउ टू ऐड वैल्यू। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। बताइए बताइए। हाँ सर, सर टेल मी सर रिगार्डिंग आंसर राइटिंग सर। ये क्या जानना है? Sir, actually, I have just appeared prelims right now, but I couldn't clear it. So I am in the mode of right now. I am doing answer writing, means, and I'm planning to join Forum IAS MGP program. Okay. So sir, means what are the prerequisites? Because I am doing answer writing self. ठीक है, प्री रिक्विजिट्स फर्स्ट वुड बी पेन पेपर पेंसिल, वो तो रहेगा, इसका जरूरत है उसका। ठीक है। सेकंड प्री रिक्विजिट वुड बी गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपका जीएस प्रिपेयर्ड नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर मनी एंड गोइंग फॉर आंसर राइटिंग। का जीएस प्रिपेयर करो, उसको आंसर राइटिंग जाओ। थर्ड प्री रिक्विजिट वुड बी अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसीविंग फीडबैक। आपको लगेगा कि अब मेरा फीडबैक आंसर बेस्ट है, मेरे को नंबर दिया उन्होंने 50, कोई ग्रोथ नहीं होगा। आपको एक्सेप्ट करना है, चलो आई एम नॉट गुड बट आई विल बी गुड, आई हैव द पोटेंशियल, आई विल बी गुड वन डे, ये भरोसा रखना पड़ेगा। These are the prerequisites about if you want to know about answer writing. Sir, but I think knowing one thing and writing is completely different. Means you have the knowledge and means you write actually means this. तो वही है ना कि Rome was not built in a day. Gradually लिखना आप start करिए, gradually होगा। First day I'll tell you the first time when you write an answer या फिर आपने लिखा होगा, so I'm sure you must have taken 15, 20, 25 minutes Yes. to write an answer. Yes. क्यों? Because आपको practice नहीं, but today can you bring your answer somewhere around 10 minutes or 7 minutes? आ पाता है ना? Yes. Same चीज practice होगा। Knowledge है, trust me, content is there, content won't be an issue 90% of the questions. In 18 out of 20 questions, content won't be the issue. Present करना, कैसे value added बढ़ाना उसका, this is what comes with time. Practice करिए, हो जाएगा। सर मतलब नॉलेज तो सर लगता है कि है, मतलब काफी पढ़ा है 1-1.5 साल का, मतलब और लिख भी लेता हूँ, बट मतलब वो मतलब लगता है, मतलब अंदर से उस टाइप का लगता नहीं कि मतलब ये सही राइट टाइम है ही मतलब आंसर राइटिंग करने का, क्योंकि मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्चुअली प्रीलिम्स है और मैंने स्टेट पीसीएस भी एक दिया है, इस कारण से थोड़ा कंफ्यूजन लिटिल। देखो, if your GS is knowledge done, तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। जीएस डन नहीं है तो मैं सीधा बोल देता हूँ आंसर राइटिंग मत करो, ठीक है। पर जीएस अगर किया हुआ है तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। व्हाट यू कैन वांट इफ यू फील यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट अगस्त एंड तक वापस एक बार जीएस रिवाइज कर लो, उसके बाद से कुछ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। इवन इफ नॉट फुल लेंथ टेस्ट, तो डेली 2 3 4 5 क्वेश्चन टाइप के लिखो टाइम करके, और ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। Regarding answer writing, I want to add some points. Like, बिल्कुल for the answer writing, आपको एक लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, so that you can execute your thoughts जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। So आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना लिटिल बिट। तो उसमें अगर आपकी कमांड है तो इस दिन अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो इफ यू कैन समराइज दैट ना, तो वो भी आंसर राइटिंग का पार्ट ही एज अ काउंट होता है। तो इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो आप समझ सकते यू आर ऑन राइट ट्रैक। वो तो फिर ठीक है कि आप कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद लिखेंगे, लेकिन ये भी कर सकते हैं। Any other question? Hello, sir.
मैंने इस बार प्रीलिम दिया था, तो मेरा स्कोर 87 से 90 के बीच में था और मेरा करंट अफेयर्स ही वीक पड़ गया। तो जैसा आपने अभी कहा था ना कि न्यूज़पेपर पढ़ो और एक करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लो, इस बार वो चीज मतलब काम नहीं है। तो मतलब अभी भी सेम स्ट्रेटेजी पे स्टिक करूं या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? देखिए, अगर आपका स्कोर 87 से 90 के आसपास है ना, तो मतलब आपके सोर्सेज में दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा किस्मत का खेल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट स्टिक टू योर सोर्सेज, करंट न्यूज़पेपर्स पे देखते रहिए, कई करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते रहिए, मंथली टाइप का जो भी पढ़ रहे हैं आप। डू नॉट पैनिक। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि अगर आपका 5 6 7 नंबर से मिस हो रहा है उस टाइप का रेंज, तब कोई बात नहीं है, मतलब आपका कंटेंट ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा लक का फैक्टर है। बट अगर बहुत ज्यादा से मिस हो रहा है तो मतलब आपको अपने सोर्सेज देखने पड़ेंगे। तो डू नॉट बॉदर अबाउट योर सोर्सेज लुक फाइन। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है, डू नॉट वरी अबाउट इट। पढ़ना नहीं पढ़ा होगा तो लोगों को रिकमेंड किया जाता है पढ़े, क्योंकि आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर अच्छे से। ठीक है, तो डू नॉट वरी, डू नॉट वेरी स्ट्रेस सो मच ऑन योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ठीक लग रहा है मुझे, आपको मुझे डिटेल नहीं पता, बट न्यूज़पेपर वाला सेक्शन ठीक लग रहा है, न्यूज़पेपर प्लस वन करंट अफेयर्स मैगजीन। बाकी इसके अलावा देख लो आप, मतलब अपना वही चीजों को वापस देखो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो बहुत सारा, थोड़ा सा किस्मत का फैक्टर होगा, अगली बार क्लियर हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, थैंक यू। So guys, we have last 15 minutes, so you can raise your hand and ask him any question. Simukh is Sir, raising the hand. Yes, Bhupesh. sir, have you made notes? Have you made notes for GS as well? All GS papers. I have not made notes for GS. So what was your source of preparation? Sorry? Source of preparation. So have you referred any toppers note, like only standard books? I would see. I have mostly standard books, and sometimes इधर उधर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया उसके लिए कोचिंग नोट्स ऐसे देख लिया, फ्रीली अवेलेबल जो टेलीग्राम पे और यहाँ पे मिल जाती हैं सड़कों पे, वो सब। Other than that, if you want to refer a good topper notes for main, I would suggest if there is this sir Rishikesh Reddy sir. In fact, if you guys go to my Telegram channel Shubham Shukla IAS करके, तो उसमें भी मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर का मतलब नोट्स अपलोड किए हुए हैं, तो उनके नोट्स आप देख लो, उन्होंने बहुत कंप्रेहेंसिव नोट्स बनाए थे मेंस की पर्सपेक्टिव से, तो उनको भी आप देख सकते हो। मैंने थोड़े बहुत देखे थे, आई विल नॉट लाई, मैंने थोड़े बहुत देखे थे। सर आपने मेनली रेड्डी सर के नोट्स को रेफर किया था जीएस के लिए? मेनली अपने बुक्स को रेफर किया था, अपने सोर्सेज को रेफर किया था। मैं नोट्स बनाने से ज्यादा अंडरलाइन करने में ज्यादा मैं कंफर्टेबल था, मैं वो करता था। जहां जहां कुछ डाउट लगा, कुछ एक्स्ट्रा देखना हो, मैं ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स को देख लेता था। जैसे सर फॉर एग्जांपल GS2 पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही सोर्स बनाया फॉर मेंस आंसर? प्राइमरी सोर्स लक्ष्मीकांत रखा है, इसके अलावा करंट अफेयर, पेपर 2 इज वेरी मच अबाउट करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी काफी हद तक करना पड़ता है, राइट? तो सर ये अप्रोच ठीक है कि नोट्स नहीं बनाना और स्टैंडर्ड बुक्स रखना, ये अप्रोच ठीक है? सर देखिए, मेरे लिए काम किया है, ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, वो बिना नोट्स बनाए रह ही नहीं सकता है, तो नोट्स बनाना पड़ता है। अगर आपको लगता है नोट्स बिना बनाए आपका फायदा हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो भाई मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे आपका पतन हो रहा है, तो भाई बिल्कुल नोट्स बनाओ। इट्स अप टू यू। बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सबको अपना हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करना है, सबकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन स्टाइल होती है। अगर आपको लग रहा है समथिंग इज गुड फॉर यू, डू दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉपर से। ठीक है, आपका पेपर मैं नहीं लिखूंगा, पर खुद लिखेंगे। आपको लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने से फायदा मिलेगा, बिल्कुल नोट्स बनाइए, आंख बंद करके नोट्स बनाइए, ठीक है। और सर PSIR के लिए आपने विभोर सर के नोट्स को रेफर किया था, जो आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाले हुए हैं? मैंने डाला है टेलीग्राम ग्रुप पे, विभोर सर के नोट्स को मैंने एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल रेफर किया था, कुछ मान लो कीवर्ड हो गया, स्कॉलर्स का नेम, सब चेक करने के लिए। विभोर सर का नोट्स इज आल्सो गुड फॉर रिवीजन, अगर रिवाइज करना PSIR तो इट्स आल्सो वेरी गुड फॉर दैट। बट मोस्टली मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स देखे थे PSIR, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचा था कुछ और पढ़ने का। जो उनके प्रिंटेड नोट्स हैं या फिर सर हैंड रिटन? मैंने हैंड रिटन लिया था। जो पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस वाला कोर्स है उनका? हाँ, उनका देखो, वो मैम के यहाँ से आप लोगे, आपका 8-9 हजार पड़ेगा, जो भी जितना पड़ेगा, आई डोंट नो अबाउट मनी। मैं ऐसा था कि मुझे जल्दी जल्दी करना था, कब आएगा कब नहीं आएगा, मैं सीधा दिल्ली से, वो जो दुकान है ना यहाँ पे दिल्ली में, ORN में, उनसे उठा लिया था। अच्छा, ओके सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वी हैव टू कंसोलिडेट ना एवरीथिंग, उसके लिए पूछा है सर। एक क्वेश्चन, डिड यू रीड बेयर एक्ट? नो, आई डिड नॉट रीड बेयर एक्ट। Sir, I have a doubt, sir. Sir, I wanted to ask you, sir, 23 में मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ, तो सर मैं हर हफ्ते कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ रही होती हूँ,
मतलब मैं MGP मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो संडे को टेस्ट रहता है, तो आई प्रिपेयर फॉर दैट सर। बट फिर ऐसे वो दिसंबर तक चलेगा, तो आई विल कवर द होल सिलेबस टेस्ट के हिसाब से। बट सर फिर मैं रिविजन स्ट्रेटेजी उसमें कैसे बनाऊं, सो दैट मैं कंसोलिडेट भी कर सकूं व्हाट आई एम रीडिंग एंड आई एम मेकिंग नोट्स अलोंग विद इट। ओके, तो लेट्स से मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा, आपका टेस्ट किस दिन होता है मैडम? आपका जी टेस्ट सर, वो संडे को होता है। ओके, तो लेट्स से आपने मंडे टू लेट्स से आपने ट्यूसडे टू संडे पढ़ाई की और टेस्ट दे दिया। जी जी। मंडे को आप वापस इस पूरे वीक में जो पढ़ा है, क्योंकि संडे को टेस्ट दे के थोड़ा चिल कर लोगे ऑब्वियसली, मंडे को इस वीक में जो पूरा पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो। ऐसे एक महीना के लिए करो, 4 वीक में 4 टेस्ट हो जाएंगे। अगला महीना जब स्टार्ट होगा तो 1 या 2 दिन ये पूरा रिविजन साइकिल को रिपीट करने में लगाओ, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करो, फिर ये सिंपल चीज अगले महीने फॉलो अप करो। समझ रही हो आप? जी सर, फिर हाँ पहले का भी याद कर सकेंगे। एग्जैक्टली, उनको वापस आप रिविजिट कर पाओ फ्रीक्वेंटली, टाइम टू टाइम। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। एंड सर वन मोर डाउट सर, एक्चुअली सर आई थिंक आप सबको ही पता है, टेलीग्राम पे लुकमान आईएएस के अच्छे वीडियोस हैं फॉर एथिक्स, एंड वो कुछ 30-40 वीडियोस हैं। तो फिर सर वो हम देख के उससे एथिक्स को अपना बेस मटेरियल बना सकते हैं ना? देखिए, एज अ टॉपर आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग पायरेटेड मटेरियल्स, बट मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि लुकमान सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अच्छे हैं, लुकमान आईएएस अच्छे नहीं है के वीडियो लेक्चर्स अच्छे हैं। इसके बाद जो आपको ऐसे अच्छे हैं, दे आर गुड फॉर एथिक्स। जी जी सर। अब इसके बाद जो जी सर। इंटरप्रिटेशन निकालना है आपको निकालिए। मैं आई विल नेवर रिकमेंड कि ये पढ़ो वो पढ़ो, स्पेशली इफ इट इज अ कॉपीराइटेड मटेरियल, तो मैं वो नहीं बोल सकता, सॉरी। जी सर। जी सर। आपको मेरा पर्सपेक्टिव पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सर सर बताइए, समवन एल्स इज आस्किंग अ क्वेश्चन, बताइए। सर एक्चुअली मेरा सर ऑप्शन सर PSIR है। सर मैंने सुब्रा रंजन सर मैम के नोट्स मैंने सारा पढ़ा है, बट सर अभी आंसर राइटिंग में सर एक्चुअली मैम का कॉस्ट बहुत ज्यादा है आंसर राइटिंग का। तो सर मैं तेजल मैम एक है लेवल अप IAS में, उनकी मैम सर मैं टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, मतलब क्या वो ठीक है? सॉरी यार, मुझे एकदम आइडिया नहीं है यार उनके बारे में, तो मैं रिकमेंड नहीं। मैं ही वांटेड टू आस्क कि वो जो मैडम है उनका वो टेस्ट सीरीज ठीक है, नहीं तो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, आई एम सॉरी। गलत रिकमेंड कुछ नहीं, मतलब जो मैंने किया नहीं उसे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, या जिस मुझे पता नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, बट इफ इट्स हेल्पिंग यू इन सम वे, गो अहेड विद इट। आपका एंड ऑफ द डे फायदा होना चाहिए, आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे जिनका 23 में अटेम्प्ट है उनका एक ब्रॉड टाइमलाइन बता देंगे कि कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 23 अटेम्प्ट वालों के लिए? पहले मेंस करें या दोनों को काउंटर? देखो भाई, मेंस का और प्री का अलग अलग पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है? ऑप्शनल एंड जीएस का अलग अलग हो सकता है, मेंस एंड प्री का अलग नहीं होता है। इंटीग्रेट करके पढ़िए आप। लक्ष्मीकांत 2 बार नहीं पढ़ोगे, एक बार प्री के लिए एक बार मेंस के लिए। इंटीग्रेट करके पढ़िए, तो आप प्री में अच्छे से कर रहे हो, आपको मेंस में फायदा देगा, ठीक है? और पैरेलली हफ्ते में अगर आप जीएस लेते हैं, 7 हफ्ते हैं, हफ्ते में 4 दिन अगर आप जीएस के 3 पेपर्स को कर रहे हो, 5वें दिन आप एथिक्स प्लस ऑप्शनल कर लो। ओके ठीक है, यस सर। ऐसे करिए नवंबर दिसंबर तक जीएस कंप्लीट हो जाए, एंड जब आप पैरेलली करते हो तो ऑप्शनल लेक्चर फरवरी तक कंप्लीट हो जाए। तो जनवरी और फरवरी में केवल ऑप्शनल करो और थोड़ा बहुत जीएस रिवाइज करते रहो, और मार्च के से आप टेस्ट सीरीज एंड उसके टेस्ट सीरीज का एनालिसिस एंड इफ रिक्वायर्ड रिवीजन ऑफ जीएस भी करते रहो एक बार, ठीक है? अच्छा, मतलब जैसे नवंबर दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जीएस का? ट्राई करके कंप्लीट करो। Last 5 minutes. Then we will consolidate. भाई लास्ट 5 minutes. Yeah, we will conclude this. सर एक्चुअली आई वांट टू डाउट। Yeah, Shimu. पूछिए। यस सर। सर एक्चुअली क्या है कि सर जैसे कि ईयर में जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो विजन की मैगजीन में आते हैं, बट सर व्हाट आई फाउंड कि मैं 2-3 बार उसको रिवाइज करने के बावजूद भी रिमेम्बर नहीं कर पाता और आंसर राइटिंग में नहीं लिख पाता। तो सर मैं क्या करने लगा कि उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेता हूँ उससे भी सर, तो जिससे कि मुझे याद रहता है। जैसे कि अभी वो कैपिटल पनिशमेंट का चल रहा है या जीएसटी काउंसिल का था, वो मैंने सब नोट्स बना तो मेरे को रिमेम्बर रहता है, बट प्रॉब्लम इसकी इट टेक्स टाइम।
तो मैं सर कहीं मेरी अप्रोच रॉन्ग तो नहीं है? आपका उससे फायदा हो रहा है ना? यस सर, यस सर। ये आपका फायदा हो रहा है, अगर आपका फायदा हो रहा है तो इट्स गुड फॉर यू। थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है तो यही करिए कि कहीं और से टाइम कट करके थोड़ा वो करिए, या फिर और नोट्स को थोड़ा कंसाइज कर लीजिए, कीवर्ड्स लिख लीजिए। कीवर्ड्स इज द वर्ड व्हिच विल एक्सप्लेन 3 or 4 लाइंस इन अ कपल ऑफ वर्ड्स। ऐसे करके करिए, डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस। यस सर। एंड सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि कोई भी इंसान है जो अभी तक एथिक्स जिसने देखा भी नहीं है, हाउ ही शुड स्टार्ट इट? एथिक्स इजी है, एथिक्स का बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो मैडम बोल रही थी कि वो लेक्चर मिलता है, वो देख सकते हो। नहीं तो 2-3 बुक्स अच्छी अच्छी है। एक डिकोड एथिक्स बुक है मुदित जैन सर की, एक बालाजी सर की एथिक्स की बुक है, वो देख सकते हो। यही सब एथिक्स, और टॉपर्स ही टॉपिक्स देखते ही रहो यार। मतलब देखो, एथिक्स का पेपर ऐसे आता है ना, तुमको आज उठा के रख दिया जाए वहां पे, तुम लोग आज भी लिख के आ जाओगे। कंपैशन, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसको नहीं पता है सब चीजें, ठीक है ना? वो सब एथिक्स पेपर बहुत दिमाग, मैंने क्या बोला, एथिक्स पर दिल से लिखना है, थोड़ा सा दिमाग यूज कर। Hi, एथिक्स sir. इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी। Can बताइए I सर, ask हेलो। a question? डेफिनेटली सर, प्लीज। Yeah. So I was attempting a question today on GS2. Uh, can I ask your input on that? ओके, श्योर। So the question goes that what are the basic functions of a constitution and illustrate in the context of Indian Constitution. So my question is, does this question has two parts or both the parts are interconnected? They overlap a lot, but this question has 2 parts. So you start off with writing what is a constitution, and you can give a briefing about a constitution. Is about why constitution is important. Then, like main body, first part you talk about what are the important parts of constitution. Why is the constitution necessary? Rule of law, limits on the power of government, gives power to the citizens. Yes, and then you can write about the special features of the Indian constitution by giving examples. And at the end, you can write Dr. Ambedkar's quote in conclusion that no matter how good the constitution is, it is the people who drive the constitution that determine the success or failure of the constitution. This is how you approach an answer. So basically, the answer should be concentrating on the political entity only. Political Because entity when, as in? yeah, as in, I mean, like a nation or state. Because when I started answering, I answered the first part being political as well as apolitical. The definition of my constitution that I wrote is a constitution is a set of rules and principles on which an entity is governed, be it political or apolitical. And I gave some 4-5 general functions of constitution, and then started writing it in Indian context. Context, yeah, true. You can talk about India, how constitution it declares the source of power, how it limits the role of government, how it provides rights to people. But my question of powers. Then I stuck here that the second part specifically says in the question that illustrate in the context of Indian Constitution. So my question is, that's what I'm telling you. Yeah, so should I interlink both the parts of the question, or should I approach first part apolitical and second part in the context of Indian Constitution specifically? See, they are both political. The points in both the part of the question will be political, but not necessarily they will be overlapping, but not necessarily they won't have to be the same necessarily, right? For example, if you're talking about constitution acts as a limit of the on the government, okay, why is it important? Same you can write in that fact that it limits the excessive or arbitrary use of power by the it calls for separation of power, right? Article 50. So this is something that you can be using it. No, you're answering a question. My question is सर ऑप्शनल की, अरे भैया सर ऑप्शनल की हम टेस्ट सीरीज प्रीलिम से पहले हमें करना चाहिए ज्वाइन, इफ आई कैन कंप्लीट माय सोशियो सिलेबस बाय अक्टूबर. Ma'am, give me 2 minutes. If questions are, I'll come to you. All right, thank you. So my question is not on the content. Dude, see, that is what I'm trying to help you understand. There necessarily does not have to be a watertight separation between two parts. They can overlap. There's nothing wrong with overlapping of letters. And at the same time, you do not have to separate the political and the non-political. Indian Constitution performs the role of a political entity as well as a non-political entity, which is for the Constitution, which is peculiar to India. So when you're writing with the context of Indian Constitution, you have to include both these factors, political aspect as well as the non-political aspect.
Similarly, the benefits of a constitution are both political and non-political. When you're writing that side, you have to give both this writing. Did you get me now? So last question Maggie can ask, then we will conclude this session. That madam asked me about socio ka wo, ठीक है? So about socio ka answer writing, if you are done with your optional, you can definitely go ahead with your answer writing. Like this happens to well, especially veteran aspirants. If you are done with your optional and एक दो बार revise कर लिया आपने, so definitely you can start off with your answer writing. No rush in that, but it should no way derail your preparation for your pre and your other papers, right? वो भी देखना पड़ेगा आपको. जैसे मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जैसे पूरे जो 8 to 10 टेस्ट का शेड्यूल वैसे फॉलो करके क्या ऐसे घर पर ऐसे whichever suits you. आपको लग रहा है फॉर्मल इंस्टीट्यूट में बैठ के आप दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो. नो लॉन्ग इन दिस. एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस तो हो रहा है ना, जैसे करो. ऑलराइट, थैंक यू सर. whichever suits you. Okay, guys, we are concluding this. Thank you, Shubham, for giving your valuable time. Thank you, sir. All the best for your. Much, guys. Thank you so much. Really glad being here, and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks to all for your presence. We are ending here. भाई जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं. आपको पता चलेगा आप 3 साल में